Assalamualaikum. Assalamualaikum, Awaisha. Can you hear me? Yes, perfectly fine. Am I audible? Yeah, you are. So I already gave your introduction, but that live I had to delete it, discard this. So Mhm. over to you now. Would like you to have and give your introduction in a brief way and share your experience so that we can begin with our session. Thank you. Okay. Thank you so much, Manaza. Thank you so much for inviting me over. So people, my name is Awaisha Inayat, No problem. and a certified cognitive behavior therapist. And today we'll be talking about stress management. Um, so Awaisha, I think there is some internet issues at your side because your video is on loading. Can you guys hear me? Okay, maybe there's some internet problem. That's what the problem here is, Pakistan. Okay, hello. I think, yeah. Can you hear me now? I think there's some internet Yes. issue at your side, maybe. I don't know. Anyways, let's restart. I am Yeah, not sure. sure whether my introduction was heard by the audience. No, So it I'll was on begin the again. loading. Your video was on the loading. So, yeah, Okay, start okay, again. okay, okay. Right. So guys, welcome to the session. My name is Awaisha Inayat, and I am a professional psychologist with 6+ years of experience in clinical, industrial practices, organizations, as well as education. I'm also a certified cognitive behavior therapist, and welcome to the session on stress management. Thank you so much, Avisha. And I would want to know why do we really need to focus over stress management? Because I usually record the videos over business and personal development, but self development is also a base structure that we need to focus on. And Yeah. over here, we've been having a lot of queries coming along to understand how we can live a good life without having any stress, how we should not take few things very personally to our lives because all the time 24/7 we are thinking we think 80 or 70,000 thoughts in our day. So I begin with the very first question with you is what is stress? You being a certified cognitive therapist, how do you explain what stress is for a human body? Hmm. So, very valid point, Marisa, just as you said, कि हमारे पास दिन में 70 to 80 thoughts आ रही होती हैं. I'll begin with a very simple example. You know how fishes live, right? They're underwater, and they know how to go about with different fishes, different breeds, and how to have their food hunt and everything. मैं उसकी एग्जांपल अपने स्ट्रेस के साथ ऐसे रिलेट करती हूँ because when fishes they're doing everything but one thing that fishes doesn't know it's their environment. उनको नहीं Hmm. पता होता that they're underwater. So is the case with human beings. We are literally doing so many things in our lives, but we don't know where we are stressed and how we are stressed. Which brings me to the textbook definition of the stress. Okay, you don't choose to be stressed yourself. It just happens, right? Hmm. Stress, according to the textbook definition, is involuntary physical Hmm. plus psychological response to a stressor. And when I say involuntary, again, it's not conscious. Again, you don't go for it. It just happens, right? स्ट्रेस स्ट्रेसर्स की वजह से होता है और Hmm. स्ट्रेसर्स हमारी लाइफ में क्या है जो हम बात करते हैं ना 70 to 80 डिफरेंट थॉट्स Hmm. वो हमारे स्ट्रेसर से रिलेटेड होती हैं फॉर एग्जांपल द मेन स्ट्रेस दैट वी हैव इन आवर लाइव्स दीस डेज इज वर्क रिलेटेड Hmm. we have work related deadlines, we are working overtime,
A lot of researchers they suggest that now per day we are spending 2+ hours in just responding to the emails. Yeah. And just because we have access to emails and a lot of things from our phone and personal laptop of work, तो हमारा जो spare time होता है ना उसमें भी we are just giving few minutes to those calls and emails. तो हमारा वो spare time और work related time में कोई difference नहीं रहता. ठीक है. Hmm. तो एक तो हमारा हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेसर है दैट्स वर्क रिलेटेड में हमारे पास डेडलाइंस आ जाती हैं. फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हमारे पास बहुत Hmm. ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं. फॉर एग्जांपल फोमो. FOMO is fear of missing out. Everybody wants to be on top of everything. We want to Yeah. look physically attractive. We want to be fit. We want to be happy all the time and every time at any given point in a day. We want to be financially successful. We want to be socially successful. Yeah. फिर उसके अलावा It, जो हमारे पास it's a stresses होते pressure. हैं. It's a society pressure. Exactly. And coming to the society pressure, हमारे पास we have to take care of our relationships, Yes. conflict issues, you name it. तो ये सारे वो stresses हैं जिस पे हम involuntary response दे रहे होते हैं. So this is what stress is. Hmm. So, if I talk about related stress, people are doing Hmm. 9 to 5 jobs. I've been into a very high intensity work environment where we had to Hmm. produce numbers and, building businesses. Hmm. And there's so much, like, there are companies who are actually hiring people who can do multitasking, giving 2 to 3 designations or two to Yeah. three, JDs, job descriptions to do, take 2 to 3 work from a one person, and they don't Yeah. realize how much you are giving them a pressure. In such environment, how Hmm. would you suggest, how many times do we need to take a break from our work? Okay. So, that's a very good question. And before I jump into the answer of this question, what's the most interesting thing? As a psychologist, I believe this, जैसे हर coin के दो side होते हैं. तो Hmm. एक side तो ये है कि a busy life is a good life. And that's Yeah. actually the truth, right? Yeah. And the downside of it हम देखते हैं कि जी एक stress है which leads to eventually burnout where people actually feel collapsed. उनको लगता है कि now they're crumbling down. ठीक है. Yeah. तो इसमें basically as a psychologist I would ask a question why. When we say कि busy life is a good life and at the same time we say कि dangerous है, stress Hmm. जो है वो इतने हमें physical emotional problems create कर देता है. Hmm. So the point is how to create stress tolerance. ठीक है. Hmm. जो आपने क्वेश्चन किया ना कि ब्रेक लेना कितना जरूरी है, ब्रेक Okay. लेना उतना ही जरूरी है. Why? Because you need your creativity and multitasking and your innovation, productivity to be enhanced at that time. Why? Because एक job की requirement है. Hmm. तो coming to this point कि जब coin के वो दो हिस्से हैं and it means the same, तो हमें सिर्फ stress tolerance पे काम करना है. Hmm. ब्रेक लेना Hmm. उतना ही जरूरी है. Why? Because you have to zone out from what was actually going on, nourish Yeah. your mind, nourish your body. At times I have literally seen a lot of people who forget to drink water in those hours. Yeah. आप इतना जब neglect अपने आप को करेंगे, आप इतना भी break नहीं लेंगे कि when you have to take water, you will Hmm. eventually going to be very very stressed to the point that you are unable to handle the stress. So yes, it is suggested कि take 15 minutes break. जैसे अगर आपको पूरे work Hmm. hours में आपको 1 घंटा lunch break मिलता है, so instead of taking that 1 hour at stretch for your Hmm. off, take 15 minutes break. Detach yourself from screen time. Detach yourself Hmm. from work emails and everything. Hmm. बहुत सारे लोग वो स्मोकिंग जोन में चले जाते हैं. बहुत सारे लोग Wow. चाय का ब्रेक ले लेते हैं. कुछ इस तरह से करके gossip around, do something. Hmm. So, what happens in the very first stage when stress, responses to your body, and how do we need to respond back to that stress? Hmm. Hmm. Basically होता ये है कि whenever you are faced with such a stressor, देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी का जो फिजिकल रिएक्शन है ना वो फ्रॉम द डे वन, जब हम जॉब हंटिंग नहीं करते थे, जब हम फूड हंटिंग करते थे इन द जंगल इन Hmm. द फॉरेस्ट, टू दिस पॉइंट व्हेन वी आर वर्किंग इन द ऑफिस, बॉडी का रिएक्शन सेम ही है. होता ये है कि जब कभी वी आर फेसिंग सच काइंड ऑफ स्ट्रेसेस,
तो वी हैव ए ब्रेन पार्ट विच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो ब्रेन में ही है। वहां से सारा चेन ऑफ रिएक्शन शुरू होता है, हार्मोन्स हमारे रिलीज होना शुरू होते हैं, एंड एज पार्ट ऑफ चेन रिएक्शन हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, एज अ रिजल्ट इट ब्रिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, यू विल फील योर हार्ट इज रेसिंग, यू हैव वेरी पैनिकी सिम्टम्स, आपको यू फील योर दैट योर स्टमक इज अपसेट, और इस तरह की आपको सिचुएशन फील होना शुरू होती है, एंड दैट्स ए फिजिकल रिएक्शन टू अ स्ट्रेसर। यू इवन फील कि आपकी सारी एनर्जी आपके हाथों और टांगों में आ गई है। ये बेसिकली करते ये हैं कि आपको फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स पे ले जाता है। मैंने जैसे कहा अच्छा, कि हम पहले राइट टाइगर नाउ। को फेस करते थे, नाउ वी आर फेसिंग, हमारे पास जो टाइगर्स हैं वो डेडलाइन की बेसिस पे है, हमारे पास जो टाइगर्स हैं वो हम्म, रिलेशनशिप्स की बेसिस पे है, हमारे पास जो टाइगर है वो ये कि टाइम पे पहुंचना है, वी आर स्टक इन ट्रैफिक जैम, राइट? हम्म, तो इन दैट सिचुएशन आवर बॉडी इज प्रिपेयर्ड फॉर ईदर फाइट रिस्पॉन्स या फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो फिजिकली हम्म, हमारे साथ ये हो रहा होता है। Now imagine that if we are living in the fight and flight response for a very long time, हम्म, eventually physically ये होता है कि आपका immune system weak होने लग जाता है, you feel a lot of you have a lot of stomach issues, हम्म, there are certain type of cancers that are related to it, and even premature death. Why? Because your ओके, body is not relaxed at all. या, It's in the fight and flight mode all the time. हम्म, इमोशनली ये होता है कि देखिए, आपकी जो कॉग्निशंस होती हैं, आपकी जो थॉट्स होती हैं, आपकी जो परसेप्शंस होती हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में फिजिकली एक रिएक्शन क्रिएट हो चुका है, तो दे आर जस्ट फोकसिंग टू डील विद दैट टास्क ओनली। हम्म, मूड इरिटेबिलिटी, इंटॉलरेंस, बर्नआउट, किसी चीज का अच्छा नहीं हम्म, लगना, नींद हम्म, का डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी हम्म, चीजें जो है ना इमोशनली आपके साथ हो रही थी, और फिजिकली इमोशनल रिएक्शन जो है ना वो हमेशा ओवरलैप कर रहे होते हैं। हम्म। So how much sleep is important for our such, you know, hyper focused life? How much हम्म sleep do we need to have? Because usually लोगों को नींद नहीं आती और उनको ये नहीं समझ में आ रहा हम्म होता कि उनको लगता है कि उनका दिमाग काम कर रहा है, उनका दिमाग क्यों काम कर रहा है? Because you guys are, stressed. Sometimes मुझे नींद नहीं हम्म आती थी, and I हम्म used to feel like, oh my God, my head is, so active, it's working. या Even though if I have not eaten anything, I was like, I feel so energized या because I did not knew about such things. I didn't know that that particular thing is taking me to disadvantages of my health. So यस how would you suggest कि कितने घंटे की नींद इज इम्पोर्टेंट? हाउ आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर में होना चाहिए कि थोड़ा सा नैप टाइम होना चाहिए, बट एनीवेज नैप टाइम थोड़ा सा पावर नैप मुश्किल होगा। पावर नैप होना चाहिए, बट वो या कुछ कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे थोड़ा इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वर्क हम्म एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन। हाउ वुड यू हम्म सजेस्ट फॉर द स्लीप टाइम फॉर इट? 6 to 7 constant hours, no break in between. आप 12 बजे सोइए और आप सुबह 7 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। वो जो 6 आवर्स या 7 आवर्स का टाइम है ना, वो आपके लिए मैंडेटरी है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन बिटवीन, हम्म, विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन। और अ लॉट ऑफ रिसर्चेस नाउ सजेस्ट कि अगर आपकी किसी दिन 5 घंटे नींद हो गई, 5.5 घंटे नींद हो गई, अगर आपने वो 6 to 7 आवर्स का अगर जो टाइम पीरियड है उसको कवर नहीं किया, तो ड्यूरिंग वीकेंड्स और ड्यूरिंग योर ऑफ डेज इन अ वीक, आप अगर 1.5 से 2 घंटा ऊपर सो लें, मतलब 7 से 9 घंटे आप सो लें, तो आप वीक का जो वो मिस आउट टाइम है ना उसको आप कवर अप कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ योर बॉडी रिकवर्स एंड हील्स, बट 6 to 7 आवर्स आर मैंडेटरी। अच्छा, इसी के साथ में एक क्वेश्चन और रिलेट करूंगी बिकॉज देखो, हम्म जो सब बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं उनके लिए गिल्ट भी हम्म होता है। देयर इज अ गिल्ट इनसाइड अस, लाइक ओ माय हम्म गॉड, मैं 12 घंटे सो गई, ओ माय गॉड। मुझे होता था, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई, अपनी दोस्त या बैठ जाना, आई हम्म यूज्ड टू फील लाइक ओ माय गॉड, आई एम वर्किंग टू हार्ड, but I have no idea how much time I'm spending with this friend. I could have worked more. I did not realize हम्म that, my goals are there, but there's a balance that I also need to have. And हम्म sometimes now I also feel, oh my God, मैं इतना सो गई,
So that हाँ guilt is there for the people who are entrepreneurs. There are people who are, 9 to 5 wale, but doing a remote job. How can we, give a message to our body and our brain that it is okay. It is okay to sleep. Give your body a हम्म rest. What do you suggest for this thing? देखिए Muneza, somebody who is so goal focused, एक Hmm. गोल है ना फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का, और probably to achieve that there are a lot of many goals are involved. तो आप इतनी आसानी से अपने आप को it's okay नहीं कह सकते. You know Hmm. what you're part of. You know Hmm. what is your body expecting out of you in terms of producing that result, right? Hmm. Isme, I have prepared three questions which I will going to read out a lot, and these are the three questions and sort of checklist for you to see कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब you have to take a break and you have to be Hmm. out with friends and everything. अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे तो it's completely okay the way you are doing it provided कि at least आप 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे हैं. So Hmm. the number one question as part of checklist is, um, are you affected by burnout, either personally or by someone close to you? Hmm. Second question, does stress have a negative impact on one of the following things? Hmm. Number one, amount of sleep, diet, amount Hmm. of exercise, amount of spare time. Hmm. And amount of spare time in this question is absolutely necessary and important, right? Hmm. क्योंकि ये आपके उस question से भी related है. Hmm. And number three, do you think you would be a happier person if you'd only be less busy or stressed? Hmm. While you're achieving all those financial goals and, working out to meet the deadline, or maybe our Yeah. promotion is near, या हमारा Yeah. yearly bonus से attached होता है, या whatever, whatever. Are we really happy in that moment? Hmm. Right? So when you ask these three questions from yourself, you will have the answer. कि ठीक है, I haven't taken a break in long. I haven't talked to a friend for this long in number of days. It's okay Hmm. अगर मैं 3 घंटे बैठ गई हूँ. But it's okay का जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा until you question yourself. Yeah. So it's like a self satisfactory, like आपने वो टास्क अपने पूरे किए हुए हैं जो आपने टू डू लिस्ट बनाई हुई है. जी और जी. अगर आपने वो अपनी स्मॉल विंस की हुई है, then it's okay to take a break. It's Yeah, okay yeah, to go yeah, out. It's yeah. okay to exercise. Okay, good. So Exactly, my exactly. next question is how to identify differences between emotional and physical stress. देखिए, जैसे मैंने पहले बात की कि number one, your emotional state is more to do, नजर कैसे आता है. Number one, Hmm. your mood. How is it like? Is it still very happy, or is it you're just struggling, you're Hmm. exhausted, you're irritable, part of the emotional stress, it's called burnout. Burnout is to the point where जब आप पहले stressful चीजें आराम से handle कर लेते थे, but you can't do it anymore. अब छोटी Hmm. छोटी चीजें जो है ना आपको इतना ज्यादा irritate कर देती हैं that you don't feel like doing anything. You're Yeah. completely collapsing. It's the Yeah. worst aspect of being emotionally stressed. फिजिकल अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. A lot of women, they complain about derma issues. Their skin is reacting, their body is Hmm. reacting. Either they are gaining weight or they are losing weight like anything. They have headaches, they have stress pains in their body, the stomach problems, या तो upset stomach bugs, constipation. Similarly, if it's prolonged and you don't take care of it and you don't know how to be stress tolerant, it Hmm. ends up in the worst cases, as I talked earlier. It could be cancer, some types of it could be weakened immune system. और weakened immune system में आप Hmm. देखिए कि आप छोटे छोटे फ्लू और बुखार से भी उस तरह से रिकवर नहीं कर पाते. And worst case scenario, premature death. Uh, okay. So I am getting question. कुछ लोगों को Hmm. जल्दी जाना भी है because हम लोग वर्किंग टाइम पे Yeah, बात yeah. कर रहे हैं.
So let me just read questions quickly. Kudos to the host and the guest for highlighting. Thank you so much, Tanha. मेरी नींद का बहुत मसला है due to my physical demanding nature of job. That is what I think. Correct me if I'm wrong. Plus, I have lost my appetite as well. Oh my God. अच्छा, उन्हीं का दूसरा है. What's the core of my problem? फिर and I have seen. अच्छा, उन्हीं की मैं list of questions पढ़ रही हूँ. And I've seen Japanese, Chinese people taking naps during afternoon. I have worked with them and they do it on a regular basis. आप हुजूर की कैलूला करने की सुनना तो ये भी लोग फुलफिल करते हैं. Is it possible if you guys could just be a part of this conversation a bit? Okay, so over to you. इन साहब का नाम है. अच्छा, मैं नाम नहीं मुझे आ रहा, इतना विजिबल नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है. But anyways, we are addressing your questions now. Okay. So a very good question. बहुत genuine concern है और बहुत सारे लोगों का ये concern होता है. देखिए, we cannot live a stress-free life. Stress is part of our life. ये एक तो ये acceptance बहुत जरूरी है. उसमें we have to make ourselves stress tolerant. जैसे मैंने बात की कि जब हम लोग stress when we are going through certain type of stress, तो हमारी body जब physically response करती है तो that's fight and flight mode. हमें उसमें नहीं जाना और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को स्ट्रेस टॉलरेंट होना है ताकि इमोशनली भी हम अपने आप को हैंडल कर सकें. सो नंबर 1 इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्लीप. 6 to 7 आवर्स डेली का मतलब ये है कि एटलीस्ट 6 7 is I think 42 hours per week की स्लीप आपकी होनी चाहिए. So if there's certain days that you are missing out, you have to cover up your sleep on the days that you can. It's mandatory. There's no way out of it. Secondly, आपको जो आपने बात की पावर नैप्स की या कैलुला की, I 100% agree with you because अगर for example आपने रात की 5 घंटे की नींद ले लिया और आपने दिन में उसको 1 घंटा कवर कर लिया है, it helps your body to recover. क्योंकि बॉडी देखें जब सोती है ना, इट comes back to its normal physical body reactions. वो जो चेन ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस एग्जैक्टली, तो वो बहुत जरूरी है. तो देखिए, नींद पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज आप कर ही नहीं सकते. एट द सेम टाइम व्हाट यू कैन डू इज टेक केयर ऑफ योर डाइट. आपने कॉन्शियसली देखना शुरू करना है व्हाट यू आर ईटिंग. इफ यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैफीन, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग 5 cups ऑफ ब्लैक कॉफी अ डे, आप अपनी बॉडी को उस फाइट और फ्लाइट मोड से निकाल नहीं रहे. यू हैव टू सी द टाइप ऑफ ड्रग्स दैट यू आर कंज्यूमिंग. उन ड्रग्स में the most common is nicotine for like literally everybody. No, आप अपनी बॉडी को अगर वो जाना भी चाहे उस फाइट एंड फ्लाइट मोड से, आप नहीं निकालते. Then what you are eating in breakfast, what you're eating in lunch, and what you're eating at night before sleeping. So it's the combination of things. सिर्फ सोने से मसला हल नहीं होगा. तो for example, if you are eating a lot of sugary foods, food high on the sugar content, वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं to keep on working more than your body can afford, right? So you have to see, consume a lot of green vegetables. Banana helps you a lot against stress. एप्पल आप लोग ज़रूर लीजिए. एक बैलेंस डाइट की तरफ आइए. थर्डली, जो आपने बात की ना लैक ऑफ एपेटाइट की, वो इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अब वो कैपेसिटी नहीं रही है कि वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर सके. वो आपको कंप्लीट एक फाइट मोड में रखी है. देखिए, जब आप फाइटिंग मोड में होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन योरसेल्फ दैट यू हैव लायन इन फ्रंट ऑफ यू and you know कि it's a life threatening situation for you. Similarly, आपके पास 2 घंटे की डेडलाइन है और आपको पता है कि काम आपको 4 घंटे का डिलीवर करना है. It's sort of a threatening situation for you. आपको तो उस टाइम पे भूख भी नहीं लगेगी, आपको तो उस टाइम पे प्यास भी नहीं लगेगी, आपको तो उस टाइम पे you will not even feel like going to the washroom, right? So this is your body preparing you for all the energy that you have to keep on fighting that stressor. So this is why with time you're losing your appetite. And sleep brings a lot of disturbances. Yeah.
there's one thing कि लोगों को नींद नहीं आती अक्सर, क्योंकि रात में लेट नाइट काम कर रहे होते हैं। एक हमारा थोड़ा सा है भी कि हमें अपना जो काम करना होता है, या चले हमें किसी हम्म। कुछ, अच्छा हम आधा काम ऑफिस से घर लेकर आते हैं, यस। ठीक है, और फिर हम रात भर लगा देते हैं अपने, जिसमें हमें सोना होता है वो हम रात लगाते हैं, और उससे उसके साथ हम चाय का कॉफी का कप रख लेते हैं। बिल्कुल। कैफीन को रात में लेना, इज इट नेसेसरी और इज इट हार्मफुल, इज इट डेंजरस? Because I have read, like, it's more dangerous that you're taking caffeine at the night time because you're destroying your sleep. या सो इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल टू टेक इट एट नाइट। देखिए मैंने Yeah. शुरू में बात की थी कि सबसे बड़ा स्ट्रेसर जो है वो वर्क है, वर्क रिलेटेड ने हमारे स्पेयर टाइम और वर्क Hmm. टाइम के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। हम काम घर Hmm. लेकर आते हैं, Hmm. हम काम कर रहे होते हैं, एंड देन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जैसे ही हमने लैपटॉप टैप डाउन किया एंड Hmm. जैसे ही हमने फोन साइड पे रखा हम फौरन सो जाएं। नो, योर थॉट्स Hmm. आर स्टिल रेसिंग। So one of Hmm. the biggest stressor now that a lot of researchers says that it's Hmm. your device that keeps you occupied. So Hmm. for example, your sleep time is 12 midnight. You Yeah. have to keep your device, your laptop and everything away at least 11:15 p.m. Hmm. Bring your body in that zone to sleep. And Yeah. at least 2 hours prior avoid caffeine. A lot of Hmm. people say कि हमें चाय पी के नींद आ जाती है. It's probably your body have adjusted to that. But Yeah. if you are taking any caffeine or any other drugs or any food that keeps you focused on something that you're supposed to do, आपकी नींद Hmm. डिस्टर्ब होगी। तो अगर Okay. आपकी हैबिट है साथ साथ कुछ सिपिन करने की, देखें दो चीजें होती हैं। एक तो आपको यू नीड एक्सटर्नल force to keep you going and all the energy के बस आपको मिल जाए और आप काम कर लें। दूसरा Hmm. तरीका ये होता है कि calm your body Hmm. and give the focus as much as you can beyond Hmm. capacity now. तो उसके लिए a lot of researchers suggest that have green tea, take chamomile tea. Chamomile Yeah. tea before sleeping is very effective for your sleep, calms you down, और जितना आपका बॉडी काम होके आपको एक प्रोडक्टिविटी रिजल्ट देगी ना वो अदरवाइज नहीं होगा। Hmm. 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 So, what are the causes of and symptoms of emotional stress, if I would ask you? हम्म। जैसे देखें इमोशनल स्ट्रेस का भी रिस्पॉन्स फिजिकली आपकी बॉडी पे आता है। जैसे अभी इन्होंने हमें बताया कि Hmm. यू लूज स्लीप, आपको नींद नहीं आती, Hmm. यूर ओवर थिंकिंग, यू डोंट नो हाउ टू Hmm. मैनेज, अननेसेसरी वरी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आपको जिस चीज की, फॉर एग्जाम्पल देयर इज Hmm. अ मीटिंग टुमारो एट वर्क, ठीक है, द मीटिंग इज टुमारो एट वर्क एंड यू हैव Hmm. मेड द प्रेजेंटेशन, राइट? सारी रात Hmm. सिर्फ नींद इस वजह से नहीं आ रही कि मैंने एक्स वाई जी को प्रेजेंटेशन देना है। हाँ. Isn't it the unnecessary why, knowing that you have given so many presentations and that your presentation is approved, all you have to do is just to stand up and give it. Lot of CEOs following me, and this is a very straight call to you guys, that you need to understand the employee that you're working with you. Yes, You need to make exactly. sure it's a balance with your work and your job and their employment as well. You need to Yes. understand that if you guys are paying them or paying his or her, you need to understand their healthy boundaries, because usually CEOs रात को 11 बजे 12 बजे 2 बजे मैसेज करें, हाँ भाई काम हुआ भाई, after 6 there's no work until unless आपने उनको रात के लिए हायर किया. It's a very straight call I'm saying this Yes. on my life. Yes. Yes. So this is very important, because they are taking care of your company, you have to take care of your employees. That is so देखिए, you important. want healthy employees. Yes. Unhealthy employee आपको कभी भी work productivity नहीं दे सकता। नहीं दे सकता. You बिल्कुल have बिल्कुल सही कह to रही हैं. see, so for example, a lot of companies that now I've seen is that they are giving really good lunch and dinner time to their employees, and that has a lot of Hmm. healthy options. The Hmm. worst case scenario, at least they're eating healthy stuff in the office. And a lot of Yeah. companies I've seen that part of their, employees' well-being policy is that they do not disturb their employees on weekend. कोई Hmm. expectation नहीं होती कि वो weekend पे email check करें. Hmm. Luckily, I'm part of that company.
who do not disturb me on my weekend. Even though whenever they do, which is very rare, I do respond it to them. But no, there are no expectation कि मैं उनको weekend पे कोई किसी चीज का answer करूँ या ना करूँ. This is how workplaces बहुत should अच्छी be. बात है. यू आर वेरी वेरी लकी. डू लेट मी नो. मैं सबको बोलती हूँ अप्लाई करते हैं. ठीक बिल्कुल, I am है. leading HR over there, so. Oh my God. You guys can follow her, please. Everyone, please follow. अच्छा, my next question is, what are the warning signs of stress? Because usually लोगों को नहीं पता होता stress के signs क्या होते, signs क्या होते हैं. Like, I was having one of my team members. She was having a fluctuation in her weight, which I saw, and then dark circles were coming under her eye, or she was having zero interest in the work. So I think कुछ मुझे feel हुआ था कि maybe she is overworked and overstressed from my Yeah. part, because me being her manager, I was feeling very bad about it. But what do you think कि आप क्या कहते हो कि what are the major warning signs of stress? तो जैसे मैंने शुरू में बात की थी when we started the session, and I will going to repeat now that if more people have joined the session. Just like fishes, they don't know about their environment. उसी तरह से हमें भी नहीं पता चल रहा होता है. Stress just happens, right? But we can identify the stressors. Is it personal life? Is it work related? Is it some relationship conflict? Is it past trauma or anything whatsoever? ठीक है. वार्निंग हमारा फिजिकली भी आ रही होती है वो वार्निंग, और इमोशनली भी आ रही होती है. सबसे पहले तो मैंने कहा कि अगर आपको जो चीज़ आप पहले बड़ी आसानी से हैंडल कर लेते थे और अब हैंडल करते हुए आप चिढ़ रहे हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, आपको जो चीज़ें पहले करना अच्छी लगती थी वो भी नहीं करना अच्छी लग रही, राइट? Similarly, आपको so another indicator that you can have is जैसे आपने बात की थी कि you're out with your friends and spending time gives you a guilt, which means that you're overworked, which means that you have to take time out, but you cannot. You're not giving your body a space to relax. उसके अलावा you're eating a lot, or you're consuming a lot of caffeine. आपको खुद वो changes पता चलने शुरू हो जाते हैं. जब आपकी डाइट डिस्टर्ब होती है तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आप बीमार ज़्यादा होने लगेंगे, आप कोप अप नहीं कर सकेंगे. A lot of women, they complain about menstrual cycle being disturbed. It is also one of the signs, right? Weight gain शुरू हो जाता है, weight lose होना शुरू हो जाता है. So you as a manager, you can look out the physical health of a person as well as the emotional, the way the person is behaving emotionally in front of you. उसको गुस्सा तो ज़्यादा नहीं आ रहा, वो ज़्यादा खामोश तो नहीं है. कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं हर बात पे. So it's also one of the indicators. There are also some certain sort of people who face I'm going to use this term because ये होता है और मैं 12 साल कॉर्पोरेट में काम करके आई हुई हूँ. It's a bully. Like एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बुली कर रहा है इमोशनली भी. आप और जो कर रहा है उसको तो फर्क नहीं पड़ा बिकॉज वो अपने वर्ड्स बाहर निकाल रहा है मुंह से, और वो उसको अंदाजा नहीं हो रहा कि किसी को कितना इमोशनली वो डैमेज कर चुका होता है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम अक्सर डैमेज हो जाती है. वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि आप इस कॉन्फिडेंस के साथ एक कंपनी में आप आए थे या किसी महफिल में आए थे या किसी फैमिली गैदरिंग में भी अक्सर ये बहुत ज्यादा होता है, दोस्तों में हो रहा होता है. तो अब जाके आपकी सेल्फ एस्टीम यहाँ आई हुई होती है और आप इंटरनली आप बहुत डैमेज कर रहे होते हो. डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो कॉजिंग द स्ट्रेस? देखिए, स्ट्रेस तो डेफिनेटली वो सिचुएशन बन रही है, ठीक है. इट इज द स्ट्रेसर, ऐसी बात नहीं है कि हम उसको कहें कि वो स्ट्रेसर नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द स्ट्रेसर वेयर यू नीड सपोर्ट, ठीक है. आप अकेले उसको कितना डील कर लेंगे? अगर अकेले आप डील कर सकते होते तो इन द फर्स्ट प्लेस आप बुली नहीं हो रहे होते या आप बुली नहीं कर रहे होते किसी को. जो बुली होता है वो इवेंचुअली आगे जाके किसी ना किसी को बुली करता है. दैट्स अ साइकिल.
तो अगर कोई आपको हम्म, बुली कर रहा है तो उसका मतलब उसके पास्ट में कोई ऐसा रह चुका है जो उसको बुली कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल। द पर्सन बोथ, जो बुली हो रहा है जो कर रहा है, बोथ ऑफ देम नीड्स हेल्प। सो इन हम्म, दैट सिचुएशन इट्स अ मेजर स्ट्रेसर। आपकी लाइफ में हर चीज इज ओके, बट जस्ट बिकॉज द पर्सन हु इज causing a lot of difficulties for you at work, और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें हिंड्रेंसेस बनती जा रही हैं, तो दैट्स वेयर यू नीड हेल्प एंड टू स्पीक आउट। इन दैट सिनेरियो हमारे पास इस स्ट्रेस को डील करने के तरीके चेंज हो जाते हैं। आप सही। जितने स्ट्रेस टॉलरेंट हो, आप हम्म, डाइट का ख्याल रखते हैं, हम्म, आप 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे हैं, आप हम्म, हफ्ते में एक्सरसाइज जरूर कर रहे हैं, चाहे वो रोजाना आधे घंटा क्यों ना हो, 25 मिनट्स क्यों ना हो, इसमें आपको एक्सटर्नल फैक्टर से सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है। So for हम्म, example, you have to see how is your HR in the company. If not या, HR, who are you closest to at work? You हम्म, can go and talk about it. And then there are people who actually come to your help for it. यू कैन सी कि हम्म, अगर आपके जो सुपरवाइजर हैं या मेंटोर एट वर्क या आपके जो लाइन मैनेजर हैं वो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर गॉड फॉरबिड आप ऐसी सिचुएशन में जहां आपके लाइन मैनेजर ही आपको बुली कर रहे हैं, तो आप अपने फेलो कोलीग्स जो बाकी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है वो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो। हम्म, नंबर वन, हम्म, आपने एचआर को कांटेक्ट करना है। अ लॉट ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान, स्पेशली जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, वहां पे एचआर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, नहीं कर पाता। अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो in that situation you go and talk to some other people, because वो जो small enterprises होती हैं, अगर HR in place नहीं है तो उनका जो strength होती है वो ये होती है कि छोटी सी कंपनी है, a lot of people are in touch, mostly it's family environment, they go and talk to somebody else. If the हम्म, situation is still helpless, you know या, sometimes आपके पास alternate option ना होना is the biggest stress of your life. हम्म, हम्म, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि वो बंदा आपको बुली कर रहा है, तो लुक आउट फॉर अनदर ऑल्टरनेट, हम्म, seek out job, look for another situation. You can even take help of therapist and counselor to know how to deal with that situation, because at times उनको deal करने का तरीका लोगों को पता होता है, probably they are not addressing to a right person. okay. There's a question. My average sleep time has decreased down to between 3 to 4 hours. And like you said, Hmm. I'm always living in the future. I'm Hmm. looking ahead what's going to happen tomorrow. Okay, that's a big, Hmm. big ओवर स्ट्रेस वाली चीज आप कह रहे हैं। मे बी यू Hmm. रनिंग अ बिजनेस, आई डोंट नो। अजीब सी मेंटल स्टेट हुई भी है मेरी। इट रियली हैज बीन टेकिंग all of all toll on me. Hmm. Could you guys suggest a good psychologist or someone who is going to tell me a way out? She is a psychologist. Saim Aslam naam hai in sahab ka. She is a Hmm. psychologist. You can message her directly, and she'll be your guide for a personal session. जी So, साइम, आप मुझे डीएम कर जी, लीजिएगा एंड देन विल फिगर आउट इन बुकिंग योर सेशन. okay. My next question, which is, पता नहीं थोड़ा सा unrealistic सा है. How to जी. live a good life without taking a stress, because we are living in a roller coaster. Nothing is, in a same stream path, but हाँ. still, I think, how could you tell people not to take things personally? Okay, so if we were to live a stress-free life, Muneza, हमारी Hmm, बॉडी में fight or flight response नहीं डलता, honestly hmm, speaking. Our हाँ, lives were stressful, they are stressful, and they will remain stressful, right? hmm, The idea is to be stress tolerant. वो जो हम बात करते हैं ना कि हम चीज़ें personally ना लें, we don't hmm, put things in our head, और ये सारी चीज़ें, it's how you make yourself stress tolerant, right? hmm, It's kind of like एक चीज का switch off करके दूसरी चीज का switch on कर लिया. So if you have observed, there are a lot of people who go to gym right after work. yeah, When they are in the gym, they're not using their phone, they're not using yeah, they're any not. screen, whatever. ठीक है? Work life का switch off हुआ होता है when they are in the gym. And when they are in the Hmm, gym, they are consuming different kind of energies to be productive so that they can sleep at night बहुत अच्छे तरीके से. A lot of people might say on live session के नहीं हम तो जिम नहीं जा सकते, कोई भी फिजिकल hmm, एक्टिविटी ले लें, go outside in the park, sit, hmm, दरख्त के नीचे बैठ जाएं, वॉक करने निकल जाएं, hmm, ताकि आपकी स्लीप बेहतर हो. जब तक आपकी नींद बेहतर नहीं होगी, आप स्ट्रेस टॉलरेंट नहीं होंगे. सिमिलरली डाइट का ख्याल रखें.
सिमिलरली अपने सोशल सर्कल का ख्याल रखें। देखें, जब तक आप इस लाइफ में रहेंगे ना कि आई आई शुड नॉट, आई माइट नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग, फोमो, हम्म फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप कभी भी अपने आप को स्ट्रेस टॉलरेंट नहीं बना सकते। यू हैव हम्म टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट? हम्म हर चीज हम्म आपके लिए जरूरी नहीं है। माय मेंटर लास्ट वीक, I was having a discussion with her and she gave such a useful tip. मैंने कहा कि आप लाइफ में देखें कि आपके लिए जरूरी क्या है, और हम्म हर चीज शुड पे नहीं आनी चाहिए। स्टॉप सेइंग द वर्ड शुड। श्योर I should do this. No, I can do this. I must do this. I cannot do this. I must not do this. इस तरह वाले एडजेक्टिव्स यूज करना शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एंड व्हाट इज नॉट अ प्रायोरिटी। दिस इज हम्म हाउ अगेन यू विल गोइंग टू मेक योरसेल्फ स्ट्रेस टॉलरेंट। इसके अलावा अपने स्पेयर टाइम का ख्याल रखें। रोजाना नहीं कर सकते तो वीकली जरूर करें। Do anything that you like. A lot of people like to read books. A lot of people like to paint, sketch. They like to go out. They like to do some sort of physical activity. A lot of people like window shopping. A lot of people like हम्म to just talk with friends and sit on tea or coffee. जब आप हम्म लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो आप ये भी सोचें आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। Are they giving you positive vibes or negative vibes? At times होता ही है कि when you're sitting with a lot of close ones and relatives or something, वो जो बात कर रहे होते हैं वो भी एक another stress होता है। They're talking about somebody else, which again is not good for your या mental health, right? तो आपने वीक में अपने स्पेयर टाइम का ख्याल रखना ही रखना। The good हम्म thing is that a busy life is a good life. But how you can make it a good life? By being stress tolerant. Because you cannot live a stress-free life. और मैंने जैसे बात की कि when you're happy, you're producing happy hormones. And this is हम्म where you do not take things personally. सोने का भी हम्म दिल चाहेगा, अच्छी चीज खाने का भी दिल चाहेगा, काम करने का भी दिल चाहेगा. And do take breaks. A lot of companies, they offer annual leaves. Utilize them. हम्म लीव इनकैशमेंट आप क्या करेंगे? ठीक है, आई अंडरस्टैंड देयर इज अ फाइनेंशियल सिचुएशन टू इट, या बट हेल्थ इज वर्क। हाउ वुड यू एड्रेस दिस थिंग बिकॉज देखें 2 साल का हमें गैप मिला था कोविड में हम्म और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करूँगी कि सोशल प्रेशर्स इतने ज़्यादा आते हैं बिकॉज यू पीपल हु आर like me I would say who want to keep on hitting the goals because मैं सेल्स की बंदी में सेल्स में काम करती हूँ तो हम्म हमारा तो टारगेट ही ऐसा होता था बस भाई व्हाट इज नेक्स्ट व्हाट हम्म इज नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट सो और हम्म उसके बाद जैसे कोविड आया तो इट वाज लाइक oh my god but what I did because I started my business from my house within my room and I knew it कि अच्छा fine this is not going to hit me or affect me हम्म because I make my brain understand and understood okay listen we have other things to do so you हम्म indulge and you plan your own activities which you are passionate about but again हम्म जैसे ही कोविड से हमें लॉकडाउन से हम बाहर रिहा हुए हैं और आजाद हुए हैं हमारे ऊपर वही सोशल प्रेशर्स आए हुए हैं ओ माय गॉड मैंने 2 साल जाया करती है which was not in our hand and हमने वो 2 साल अपने निकाल दिए और अब जाके वी आर डूइंग नथिंग एंड वी हैव टू रीस्टार्ट एवरीथिंग so what do you suggest for that that is a big time social pressure because you are keep on hitting your goal you keep on excelling it's so good to come to the pace and it is somehow हम्म very important slow down at times या सबसे पहले मैंने ऐसा जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोविड में ब्रेक आया है, ये सारी चीजें हुई। देखें, कोविड जैसा स्ट्रेस पूरी दुनिया ने देखा, और कोविड जैसा स्ट्रेस पूरी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। नहीं देखा वन था थिंग दैट कोविड प्रोड्यूस इन एवरीबडीज लाइफ इज अनसर्टेनिटी। हम्म हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग दैट, जो हम कहते हैं कि जो ट्रॉमा स्ट्रेस होता है, वो ये है कि डेथ ऑफ अ लव्ड वन। And most of the global population dealt with the death of loved one. with the death They yeah never thought कि एक वायरस से उनके loved one का इंतकाल हो जाएगा, उनके बच्चों हम्म का, उनके हस्बैंड का, उनकी वाइफ्स का, उनके spouses का, पेरेंट्स का, closed ones का, you name it, ठीक है? And a lot of हम्म people, they have lost loved ones, not just one, but a lot of people in their lives, ठीक है? yeah
तो वो एक ट्रॉमा टाइम से बाहर निकल रहे हैं और दुनिया ने लाइक लिटरली रीस्टार्ट किया है पोस्ट कोविड. So a lot of, unfortunately now our life is either pre-COVID or post-COVID. ठीक है? Yeah. And a lot of people in that COVID times who were working, who were lucky to have, the revenue generation and the financial stream for, happening, they were Hmm. overworked. They were working from home or they were working, for example, आपका जो nurses, medical staff था, they were in the hospitals and Hmm. other, Hmm. related service industry, Hmm. pharmaceuticals and the rest. They Hmm. are overworked, right? So पूरी ही global population is impacted, right? Yeah. So now that you're restarting your life, now that you have aligned your course, considering the global inflation, price hike, and like literally everything, you have to prioritize and keep a balance in your life. Yeah. देखें आप beyond capacity कब तक काम कर लेंगे? एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, एक हफ्ते कर लेंगे, probably एक महीना कर लेंगे, but not Hmm. for the entire months of the year. So for Yeah. example, जैसे आपने अपनी बात शेयर की that you have माशाल्लाह started a business, तो उसमें जब आपके goals align हो गए हैं, you know what and where you have to work on. Take Hmm. some time out in a week for yourself, Yeah. something that Yeah. you like to do for yourself, and in that particular hour, do not attend to any email, do not attend Hmm. to any message or anything whatsoever. You can Hmm. start realistically by probably 30 minutes or 1 hour. And you will going to see a difference. Why? Because when you come back to it, you will be fresh and focused. Because Hmm. body एक normal state से निकल के फिर दोबारा एक productive stage में आएगी to deal with that. Hmm. अच्छा, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, अभी तो हम प्रोफेशनली Hmm. ओवरव्यू कर रहे थे इन सब चीज़ों को. इफ वी Hmm. टेक अ बर्ड व्यू ऑफ द हाउस वाइफ्स एंड द वुमेन Hmm. हु आर वर्किंग 24/7, Hmm. वो तो बेचारी माँ ही नहीं बोलती अक्सर कि बेटा गिव मी अ रेस्ट. वो तो परेशान Exactly. होती है, अच्छा मेरे बच्चों ने खाया, मेरे बड़ी बहनें होती हैं, वो अपने बहन भाइयों का कर रही होती हैं. Hmm. And we being a woman, I am so concerned at times कि it is so important कि पता भी नहीं होता वो एंड में जाके जब वो एक certain age में आती है तब पता चलता है कि कितने बैक एंड hidden Hmm. traumas या hidden stresses थे जो कि एक disease में निकल रहे होते हैं. Hmm. What message would you want to give to them? Number one, a lot of homemakers, women, Hmm. housewives, वो जब ये बात कहती है ना कि अल्लाह ने सोने के लिए रात बनाई है, अगर वो ना होती तो शायद हम उस 24/7 लूप से नहीं निकल पाते. हाँ. सही बात है. ठीक है. एक्सपेक्टेशन उनसे जो लोगों की होती है ना, वो जो वर्क पे काम कर रहा है, जो ऑफिस जा रहा है, जो 9 to 5 अपनी जॉब कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन उसके बॉस या लाइन मैनेजर के साथ होंगी और कुछ Hmm. एक्सपेक्टेशन सबऑर्डिनेट्स के साथ होंगी. इन होम मेकर्स और हाउस वाइफ की एक्सपेक्टेशन कितने लोगों से होती है और Hmm. हर किसी की एक्सपेक्टेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं होती. अगर किसी एक दिन उनसे खाना खराब पक गया तो इतराज सबको होगा. हाँ. इंस्टेड ऑफ गिविंग अ चांस कि अच्छा चलो ठीक है आज खराब हो गया, फाइन, आप तो हमेशा अच्छा बनाती हैं. Just Hmm. these words would lift that woman so much. She will sleep Yeah. peacefully. Or somebody can ask her कि सब खैरियत थी आज जो खाने में गड़बड़ हो गई, or just being kind to them. Hmm. For them, मेरा मैसेज, हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, ऐसी ख्वातीन मुझे आके कहती हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं बचना. मैं Hmm. उनसे ये कहती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालें, even if that means going to a parlor and getting a body Hmm. massage. उस टाइम पे बच्चों को, हस्बैंड को, इन लॉज को, फैमिली को, सबको जस्ट Hmm. स्विच देम ऑफ. सेल्फ केयर आपके लिए कोई भी हो, उसको आप टाइम दीजिए. इवन इफ दैट मीन्स हायरिंग अ हेल्प, डू दैट. अपने लिए Hmm. अपने रूटीन में देके टाइम निकालें, क्योंकि सेल्फ केयर के बगैर यू आर लिटरली एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ. एंड अ लॉट ऑफ रिसर्चेस सजेस्ट दैट सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस लेवल है, दैट्स बिटवीन 25 to 35 एजेस, irrespective of men and women. Men Hmm. किसी और तरह से stressed out हैं और women किसी और तरह से stressed out हैं. And those Hmm. women who are mom and they're working mom, उनको तो फिर मेरा सलाम है ना, क्योंकि उनसे expectations ना ही mom की कम होती हैं और ना ही job related कम होती हैं. तो बिल्कुल they are, बिल्कुल. extra into it.
So for them, taking time out is extremely important, and everybody who is listening to me live right now or may listen to me later on, उन सबको मेरा message ये है कि be a support for each other. If somebody needs a me time, आप उसको दीजिए instead of questioning कि इसकी क्या ज़रूरत है या why do you need it. So one thing that I do, I mean, I'm not a working mom, I'm just a single lady handling a lot of things, but you know, even my life is not stress free. अगर किसी की कोई मुझसे expectation है कि जी मैं तो बड़ी कोई stress free life है, you know. So what I do on daily basis is have my me time. So I take 2 cups of tea every day, and that's a caffeine intake. I know, okay, it's normal for me. And whenever I'm doing that, I switch myself off from every single thing, and that cup of tea is a very mindful activity for me. I enjoy that moment. मैं उस पूरे कप को एंजॉय कर करके पीऊंगी, मैं उस टाइम पे किसी से मजाक कर लूंगी, काम की बात नहीं करूंगी. मेरे वर्क कॉलीग्स को भी इवेंचुअली पता चल गया. इनफैक्ट हमारे थोड़ा ऑफिस का कल्चर भी है कि वी एंजॉय टी. हर दफा नहीं होता, आई मीन एट टाइम्स मीटिंग में भी लेनी पड़ जाती है, तो वी कवर दैट अप विथ फूड. When we are eating, we are not talking about work. We are not talking about any stressful topic. And if I'm not at work, even if I'm on my own, I will going to enjoy that moment. तो जो 15 minutes की जो छोटी छोटी mindful activities होती हैं, that helps me a lot because I literally switch off myself. Why? Because I have to come back, you know, into positive vibes and, you know, stronger. तो ऐसी खवातीन को मेरा मैसेज ये है कि प्लीज टाइम निकालें और देखें आप कहाँ कब और कैसे टाइम निकाल सकते हैं. कौन आपका सपोर्ट सर्कल है. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू डी स्ट्रेस योर सेल्फ बाय मीटिंग योर फ्रेंड्स, डू दैट. खवातीन की जब शादी हो जाती है वो आपस में फ्रेंड्स में नहीं मिल पाती बिकॉज दे आर सो बिजी इन देयर इन लॉज. So busy. I know. Just at least do it once a month, Yeah, yeah. probably Achha, one in 15 days. Yeah, one more thing, they are introvert and extroverts. We are talking about yeah. the human nature. Introverts, Hmm. चले वो तो कमरों में बंद रह हो जाते हैं. Hmm. स्ट्रेस होते भी हैं तो भी they don't pour out, Hmm. or then they have a self talk. how how do you suggest them sometimes, क्योंकि वो शाय होते हैं, वो नेचुरली इतने शाय होते हैं, या तो वो Hmm. अपने अपने शैडोज में रहना चाहते हैं. That Hmm. self talk itself very very effective, because most of the Hmm. time we are talking to ourselves. Hmm. I think it is really important for, if you guys are introverts, that Hmm. keep yourself with harmony, talk good with you, good about you to yourself, because we always have one person within us which is spiritually very much connected to, Hmm. Hmm. mentally, spiritually. Is it Hmm. really, really important that affirmations does work? And what if introvert is running and living with stresses, what Hmm. you know options, or you know you would give them any steps कि it's okay to speak out or share with Hmm. somebody that Hmm. you know. Hmm. अच्छा, इसमें just a little a bit of clarity. कि introverts कमरे में बंद या शाय, no, even introverts interact but with very limited people, Very very limited people, limited people. exactly, that's ठीक what है, उनके entire, कुछ yeah. ही लोग होते हैं जिंदगी में, they हाँ. want to be you know with them and they talk to Hmm. them. और introverts की जो spare time में activities होती हैं वो of course extroverts से हमेशा different रहती हैं. ठीक है. Hmm. So this is how number one they cope with. And self-talk and affirmations for both extrovert, introvert, for ambivert, that's Hmm. important, right? Hmm. A lot of people keep on saying, ये तो पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, क्या ये मैं कर सकती हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ, Hmm. ये चीज दोबारा मेरे ऊपर आ गई, मैं ही क्यों इन चीज से गुजरता हूँ. This Hmm. is a negative self-statements that we give it to ourselves. We Hmm. know that in certain situations we are the only one to handle it, right? So Yeah. instead of saying this, you can say something like, I have dealt it before and I can do this now as well. Hmm. I can do this. I've handled this before. I'm stronger. I have some people to look forward to. इस तरह के जो positive self talk और ये affirmations ये बहुत ज़रूरी होती हैं. Why? Because Hmm. they keep your thoughts very adaptive. They keep your Hmm. perception very positive, and as a result, आप
स्ट्रेसर को डील कर सकते हैं. Yeah, yeah. Good thing. Last, my very, very important question: how time management can, be a, help in preventing stress? I think that's the only way to go about it. Time management brings balance in your life. You have to see Hmm. कि किस चीज में इमरजेंसी है, Hmm. कौन सी चीज अर्जेंट है, कौन Hmm. सी चीज प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप टाइम दे सको, दैट यू कैन टेक Hmm. केयर ऑफ लेटर ऑन. ठीक है. Hmm. Hmm. इमरजेंसी को तो आप हमेशा राइट अवे अटेंड करेंगे ना, Yeah. उसको तो आप कर ही नहीं सकते. उसके साथ आप देखेंगे आप कोई अर्जेंट टास्क या Hmm. इम्पोर्टेंट या जो प्रायोरिटी टास्क हैं उनको उन इमरजेंसी टास्क के साथ ले सकते हैं, ले सकते हैं. Hmm. इमरजेंसीज आर नॉट देयर एवरी डे विद यू. Hmm. Hmm. Urgent tasks that are theirs for most of the days, and priority tasks को आप पहले से planned out कर सकते हैं, right? तो Hmm. एक तो this is how you go about it. Number Hmm. two, a lot of people are good in a lot of things. You have to see Hmm. कि कौन सी चीज आपको करनी चाहिए. हर चीज should कह के ना ले लें. I should do Hmm. this. I should go out and watch a movie. कोई भी एक न्यू मूवी रिलीज हुई है, सोशल मीडिया इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग देयर यू फील लाइक अ लूजर. आई शुड Hmm. हैव गॉन, आई शुड हैव डन दैट. आप हर Hmm. चीज को शुड की कैटेगरी में ला के मैनेजमेंट खुद ही खराब कर लेते हैं. सो इफ यू नो यू कैन वॉच अ मूवी लेटर ऑन, इसके अगेंस्ट you can do something else which is important for you and urgent to take care of, do Hmm. that, right? Similarly time management देखें, एक तो टाइम आपको पता ही है कि this is for your work. ठीक है. Yeah. उसके अलावा एटलीस्ट टेक आउट हाफ आवर फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटी इन द डे. It helps you Hmm. sleep as well. uh, be conscious what you are eating and how you are eating. A Hmm. lot of people they eat in front of a screen. आपको नहीं पता चलता कि Hmm. आपने कब कैसे कितनी जल्दी और कितनी कितना क्वांटिटी खा खा लिया? ली, कितनी टाइम में आपने खाया, कितने जल्दी खाया, कितनी तेजी से खाया. ठीक है. Hmm. वहां पे भी टाइम मैनेजमेंट की बड़ी जरूरत है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डेली बेसिस पे टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो वीकली बेसिस पे करिए. आइडेंटिफाई हाउ मेनी आवर्स दैट यू आर गिविंग एट वर्क वीकली, एंड Hmm. अगेंस्ट आपका जो स्पेयर टाइम है वो कितना है. आप मंडे टू Hmm. फ्राइडे नहीं कर सकते, वीकेंड पे करिए, लेकिन Hmm. जरूर करिए. Sit out, plan your calendar. There are a lot of apps now which helps you in your time management and your tasks management, because time और Yeah. task का relationship साथ साथ होता है. Yeah. वहां Yeah. पे आप सारे tasks डालिए, and then you will going to realize that a lot of tasks they can be done later on when you do not have any urgent and emergencies to take care of. एंड ड्यूरिंग Good. दैट टाइम यू कैन मैनेज दैट ब्रेक. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि सैटरडे को आप 3 घंटे निकाल सकते हैं, यू कैन डू लिटरली एनीथिंग, इवन इफ दैट मीन्स टू बी जस्ट इन योर नाइट pajamas and relaxing on the sofa and not Hmm. attending to anything that's important and urgent, do that. Do that. Good. Thank you so much, Awaisha. I'm Yeah. pronouncing it Awaisha. right. Awaisha. And all of anyone who is watching me and going to watch us and hear from us or take the notes from us, you can directly contact her, book her for your personal sessions. And if you guys cannot share with anybody, please, you have a support and helper here. She'll be able to help you. Hmm. फॉलो हर रहनुमा पाक के नाम से इनका हैंडल है इंस्टाग्राम का. शी विल हेल्प यू इन एवरीथिंग, इन योर जर्नलिंग, इन योर एफर्मेशंस, in your listening, in your speaking. So thank you so much, and thank you so much for sharing your insight with us. That's wonderful to have you over here. Thank you. Thank you for inviting me on. Thank you everyone Thank for you. listening. Take care. Thank you. Bye bye. Bye bye. Allah Hafiz.